greater the expansion of that heart, the greater that the nur of Allah subhanahu wa ta'ala that penetrates through it. Among such pure and radiant hearts that shine the path of Iman for us is the heart of the Mujaddid of Bareilly. I want to say his titles in the English language and then in the Urdu language to present my Sipasnama, my Khiraj-e Aqidat in the court of our august Imam, the illustrious Mujaddid, the defender of the Sunnah, the vanquisher of heresy, the oceanic alim, the author of 1,000. I want your muhabbat to increase for your Imam. The author of 1,000, the master of fatawa, the senior of the ummah, the leader of the Sunnis, the top rank mufassir, the elite muhaddis, the teacher of the jurists, the qutb among the awliya, the opener of secrets, the sun among the stars, the genius muhakkik, the hafiz of the Quran, the mufti of Sharia, the arif of haqiqah, the pride of Bareilly, the scholar of the century, Ala Hazrat, Azimul Martabat, Rafi'u Darajat, Kushta-e Ishq Mahabbat, Hami-e Sunnat, Mahi-e Bidat, Qate-e Najdiyat o Rafiziyat o Tafziliyat o Nasb o Khuruj, Malhaz-e Anzar-e Nubuwat, Imam-e Ahle Sunnat Sayyidi Shah Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi alayh. MashaAllah, MashaAllah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. This humble faqir, ajiz pur taqseer, full of errors and mistakes in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. I have traveled over 20 countries in this world. I have traveled to Egypt, to Turkey, to Syria, to Lebanon, to Jordan. I have traveled across the globe and I have seen the hearts of Arabs and non-Arabs all overflowing in the love of Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayh. In Sahih al-Bukhari, when Allah Ta'ala loves someone, He asks Jibreel to make an adhan. Oh, people of this world, Allah loves so-and-so, so you must also love so-and-so. This is the asar of the adhan of Jibreel alayhi salam, that the love of Ahmad Raza isn't beating in the hearts of millions of Muslims in the world. Ala Hazrat's love is the mazhar of thumma yuda'u lahul qabulu fil ard. When Allah loves someone, that he places His love and acceptance in the hearts of people. My Imam's few books reached the Arab world, and they saw a few books. Our Imam wrote over 1,000 books. When the ulama of Makkah and Medina saw one book, Ad-Dawlatul Makkiyah bil Ma'addatil Ghaybiyah, they said, this man is a mu'jiza and miracle from the mu'jizat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ उलमाए मक्का ने मेरे इमाम की सिर्फ एक किताब देखकर उन्हें हुजूर का मौजज़ा कहा। अगर मेरे इमाम का फतावा रिज़विया जो 22,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है वो देख लेते तो न जाने वो अहमद रज़ा को क्या कहते। Ala Hazrat alayhi Rahma's one book, Ad-Dawlat al-Makkiyah, on the vastness of the ilm-e-ghaib that Allah granted His beloved Habib sallallahu alayhi wasallam. My dear brothers and elders, my mothers and sisters, the second book that reached the Arab world in 6 volumes, it reached them very late.
Jaddul Mumtar, the Hashia of Fatawa Shami, Raddul Muhtar. One of our teachers said to me from Damascus in Syria, he said, if only this one book reached us, Jaddul Mumtar of Imam Ahmad Raza Khan, it would have been sufficient for us to declare him the second Abu Hanifa of his time. आपकी मोहब्बतों को सलाम। अब मैं इमाम अहमद रजा की कबूलियत का राज बताता हूं। अहमद रजा, तेरे बख्त इतने निराले, हिंदी आलिम होकर तुम्हारा सूरज उफ़ुक़ हरमैन पे चमक रहा है। बताओ इमाम, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? I want to start with the hadith of Sahih Bukhari. Nabi alayhi salatu wasalam said, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti." ये दोनों हिस्से एक ही हदीस के हैं और इन दोनों हिस्सों में मुनासबत है, एक रब्त है। पिछला हिस्सा अगले से कटा नहीं है और अगला पिछले से कटा नहीं है। Both parts of this hadith are joined. Whosoever Allah subhanahu wa ta'ala intends good with, when Allah wants to do good with someone, when Allah wants to make him a source of khair, Allah grants him the understanding of the religion. जब किसी आलिम को देखो ना तो ये समझो कि ये अल्लाह की मुराद है और अल्लाह ने इसके साथ अज़ल में इरादा खैर किया था। Allah Ta'ala had decreed for him khair and therefore chose him and selected his heart for the pure ilm of this deen. Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Indeed I, the Prophet said, indeed I am the distributor and Allah is the giver. अब मैं पूछना चाहता हूं, पहले ये कहा गया कि अल्लाह जिसके लिए खैर का इरादा फरमाए उसे दीन की समझ बूझ फकाहत और इल्म अता फरमाता है। फिर हुजूर साथ ही फरमाते हैं अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। अब दोनों बातों में मुनासबत क्या है? यही राज इमाम अहमद रजा समझ गए थे कि इल्म की खैरात हजरत कासिम के दरबार से जुड़कर मिलेगी। इन्नमा अना कासिमुन, indeed I am the distributor and Allah is the one who gives. रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते। Our Imam taught this his entire life. If you want Sharh Sadr, if you want the opening of the heart, if you want the Afaman Sharah Allahu Sadrahu lil Islam, if you want Fahuwa ala Nurim min Rabbi, then come to the Darbar of Huzur Mustafa Jane Rahmat, because he said, Ana Qasimun, I am the distributor. जिसको दुनिया में जो खैरात मिलनी है वो सारी की सारी दरबारे रिसालत माब से मिलनी है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। The khair of the hearts and the fiqh of the mind, it is bestowed upon those who are loyal to our Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is granted as a gift to those who are loyal to the message and the sharia and sunnah and the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whose hearts are fortified with the adab of Mustafa Kareem, with the ta'zeem of Mustafa Kareem, and with the ta'zeem of every nisbat of Mustafa Kareem. अरे हम वो लोग हैं
जो हुजूर की नाले ने अक़दस पर लगने वाले तिनकों का अदब करते हैं, तो फिर हम हुजूर के सहाबा और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत क्यों नहीं दिल में बसाएंगे? हम तो हुजूर के पांव से लगने वाली खाक की भी इज्जत करते हैं। Our way is to love and respect every affiliation of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So our Imam disseminated this message his entire life. If you want the khair of the hearts and the fiqh of the Sharia in your minds, then be loyal to the Prophet and with every affiliation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The greater this loyalty, the greater the khair will open for you. The greater this loyalty, the greater the fiqh of deen that you will be granted. Our Imam Ahl Sunnat radiyallahu ta'ala anhu, look at the doors of khair that open for him. At the tender age of under 14 years, he graduates as a mufti of the Sharia. He mastered 55 sciences. He penned over 1,000 books. He established a publishing house, Matbae Ahl Sunnat in Bareilly, to print books of the causes of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. And he carried out the workload of 10 muftis in one day. And he wrote in his fatwa in one place, he said, in my office of fatwa, there are 500 questions that come in one day. And in another place he said, on this day this faqir received 400 questions. I carry out the workload of 10 muftis alone. If this is not the irada of khair from Allah subhanahu wa ta'ala, if this is not the gift of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and this is not the barakah that Allah ta'ala placed in him because of his ta'zeem and adab and ishq of the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then what is this? Our Imam, not only this, he prepared, educated and trained in the field of tadris and ifta, the mumarasa and practice of fatwa. He prepared the next generation of muftis. Huzur Mufti-e-Azam Hind, Hazrat Shah Mustafa Raza Khan is the son and the mufti who is trained by Allah Hazrat himself. Hujjatul Islam Hazrat Shah Muhammad Hamid Raza Khan is a top-notch mufti of the Sharia, trained at the doorstep of his father Imam Ahmad Raza Khan. Hazrat Sadrul Sharia wa Badrul Tariqa Maulana Amjad Ali Azami rahmatullahi ta'ala alayh is a first-ranking faqih and mufti of the Sharia. He is also educated at the hands of Allah Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayh. There are some people who acquire this nur and they internalize it. They do islah of themselves, they rectify themselves, and their nur is lazim to them. And there are some people who externalize this light. Their nur becomes mutaaddi, their nur spreads depending on their loyalty and their service to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ay mere Imam, tumhara suraj kitna roshan o taabnak hai. 100 saal guzar gaye, aaj hazaron balke lakhon ahle sunnat ke madrase Bareilly ki sanad se jude hue hain, aur लाखों मुफ्तियाने किराम फतावा रज़विया को अपनी सनद बनाकर उसे मोतबर और हुज्जत समझकर उससे फतवा जारी करते हैं. Hazrat Mufti Azam North America, Mufti Qamarul Hasan Sahib before me was speaking on a very important and pertinent topic, the masala of moon sighting. Because of the echo, I wasn't able to grasp everything that he was saying, but I understood the gist of what he was saying. Hazrat was quoting Fatawa Razawiya wala Hazrat alayhi rahma and the fatwas of our Imam. Yaad rakho, hamare Imam ki jis सीने में मोहब्बत है, ये उसके ईमान पर मरने की जमानत है, और जिसके सीने में अहमद रजा का बुग़्ज़ और अदावत है, एक दिन आएगा वो बुरी मौत मरेगा. Ala Hazrat Azimul Martabat radiyallahu ta'ala anhu, when he named his 22,000 paged fatawa,
22,000 pages it was published in. And this is missing the 10 years of his early career of fatwa writing. आला हजरत के इब्तिदाई 10 साल फतवा नवीसी के वो महफूज ना हो सके. आज फतावा रज़विया जो हमारे पास है, कम अज कम आला हजरत के 10 साला फतावा उसमें मौजूद नहीं है, उससे मिस हो रहे हैं. आला हजरत रहमा की ये वो कुछ फतावा जो हमारे पास महफूज है, वो हैं जिनकी नकलें फिर आला हजरत खुद एहतिमाम फरमाकर हर फतवे की एक नकल महफूज कर लिया करते थे. और ये एहतिमाम आपने तकरीबन 10 साल बाद किया. My dear brothers and elders, when he named his book, he named it Al-Ataya Nabawiyya Fil Fatawa Radawiyya, the gifts of the Prophet. देखने वालों शशतर हो रहे हो, हैरान हो रहे हो. ये हैरानगी की बात नहीं है कि बरेली के मोहल्ला सौदागरां के एक छोटे हुजरे के कोने में बैठकर एक कलम और दवात के साथ, जब बिजली भी नहीं है, पीने को पानी भी नहीं है, शिद्दत की गर्मी भी है, बीमारी और नकाहत भी है, एक अहमद रजा 500 फतवों का जवाब एक दिन में लिख रहा है. ये मेरा कोई जाती कमाल नहीं है, सब मुस्तफा की अता है. This is all the gift of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let me tell you something. Hazrat Malikul Ulama Allama Zafruddin Bihari in Hayat Ala Hazrat, he writes a very important thing. He says about Ala Hazrat alayhi rahmah. He says, we have seen that intelligent people usually are weak in their memory. Intelligent people are usually weak in memory. They are intelligent but weak in memory. Not all intelligent people have a strong memory. Then a person may have intelligence, may have a high intellectual acumen, may also have a very strong memory, but does not have shawq and yearning to serve the deen. Then he will not be able to serve the deen, even though he is intelligent, even though he has strong memory. Then you may have someone who has all these three qualities. He's intelligent, he has strong memory, and he has the yearning to serve the deen, but perhaps he doesn't have time to serve the deen. आप फरमाते हैं, अक्सर देखा गया है कि ज़हीन लोगों का हाफिज़ा कमज़ोर होता है. हो सकता है कोई ज़हीन हो लेकिन हाफिज़ा उसका कमज़ोर हो. और ये बहुत कम देखा गया है कि ज़हीन भी हो, हाफिज़ा मजबूत हो, लेकिन उसको शौक़ हो. शौक़ ऐसे लोगों में बहुत कम पाया जाता है. फिर मुमकिन है कि शौक़ भी हो लेकिन उसके पास वक्त न हो. अगर किसी के पास ज़हानत भी है और उसका हाफिज़ा भी मजबूत है और उसको शौक़ भी है दीन की खिदमत का, फिर उसके पास वक्त भी है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. और ये सारी की सारी बातें बतौर खर्क़ आदत और करामत मेरे इमाम में पाई जाती हैं. All of these things against the violation of the norm. Conventional norm is that a person usually doesn't have all of these qualities. My Imam is most genius person of his time. Allah gave him a photographic memory. He memorized Tanqihul Fatawa al-Hamidiyya, 800 pages of a book in one night. Ala Hazrat memorized 800 pages of Tanqihul Fatawa al-Hamidiyya in one night. He memorized the whole Quran in 1 month. People say you exaggerate, this isn't true. How is this possible? There are many ulama, alhamdulillah, that we can name from the Ahl Sunnat who memorized the Quran like this. Hazrat Saifullah al-Maslul, Shah Fazl Rasul Badayuni rahmatullah alayh. Read his biography. He memorized the Quran in 1 month. And we had great ulama. Hazrat Shah Abdul Samad rahmatullah alayh was a hafiz of Sahih al-Bukhari. We had many ulama like this. Ala Hazrat alayhi rahmah was given this quality: intelligence, photographic memory, shauq and yearning to serve the deen. He was hardworking and Allah gave him so much time. It is written in his biographies,
Ala Hazrat would only sleep 3 or 4 hours of the day. For 18 hours, my Imam would serve the deen and shariat of Rasulullah. मेरे इमाम 18 घंटे इफ्ताओ तदरीस में और तहरीर में मसरूफ रहते, और आपकी नींद सिर्फ 3 और 4 घंटों की होती। तब जाके अल्लाह ने आपसे इतना दीन का काम लिया है। आपने मेहनत की है। He worked hard, and with the faiz of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was able to do this as a way of karamah, as a way of the madad of Allah subhanahu wa ta'ala. His great work was recognized as tajdeed of this deen. His activity and impact was recognized and made him acclaimed as a mujaddid of this deen. You heard before me the hadith of Sunan Abu Dawood on the authority of Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha deenaha. Verily Allah subhanahu wa ta'ala raises after 100 years those people who renew its deen for them. When Islam is under attack from every corner, doubts are casted in the hearts of Muslims, dust and soil is thrown on the pristine mirror of Islam, the Mujaddid comes to restore the message of Islam. The Mujaddid appears to remove the dust and doubts of misguidance and heresy, and to clean the pure mirror so that the people can see the true image of the Sharia and the Sunnah. The Mujaddid Tajdeed does not mean he brings a new version of Islam. No. Islam is a mirror. It becomes stained with heresy and deviance. The Mujaddid comes to wipe the mirror. The Mujaddid comes to clean that mirror. He renews it. He doesn't bring a new religion. It's the same religion that has become dusty with heresy and doubts, and he comes to remove the dust of heresy and misunderstandings and distortions and plagiarisms. In another hadith in the Sunan of Imam al-Bayhaqi on the authority of Sayyidina Ibrahim al-Udhri radiyallahu anhu, he said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, in every successive generation, those who are reliable authorities will preserve this knowledge. ينفون عنه تحريف الغالين. They will reject the changes made by extremists. وانتحال المبتلين. The distortions of those who make false claims. وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ, and the interpretations of the ignorant people. Now I want you to think for one moment, those who deny the ilm ghaib ata'i of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I want you to think with an open heart, who is telling us this? That after every 100 years, Islam will become weak. And our Nabi knows what will happen for 100 years. And he knows that in every 100 years, Allah Ta'ala will send a reviver, my naib, my waris and my heir, an inheritor to renew this religion. जो लोग ये कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह ये हुजूर को कल की खबर नहीं, वो क्यों नहीं देखते 1400 साल पहले मेरे आका मस्जिद नबवी में ये बता गए हैं, हर 100 साल में इस्लाम कमजोर होगा, फिर अल्लाह एक मुजद्दिद भेजेगा जो इस्लाम के असली रूप को दुनिया के सामने साफ और शफाफ करके पेश करेगा। ये गैबी खबर है
This is the news of the unseen, a prophecy of the Prophet. मेरे आका को पता है मुसलमान कमजोर हो जाएंगे, सियासी फितने होंगे, एतिकादी फितने होंगे, हर तरह की तहरीकें चलेंगी, गुमराह सरगर्मियां होंगी, हर तरह से हुजूर की ताजीम पर हमले, सहाबा की इज्जत पर हमले, अहले बैत की नामूस पर हमले, कभी कुरान पे हमले, कभी हक्कानियत इस्लाम पे हमले होंगे। मेरे आका अपनी निगाह नबूवत से ये देख रहे हैं, लेकिन उम्मत मायूस न होना, मैं पीछे मुजद्दिदों का एक सिलसिला छोड़ के जा रहा हूं जो तावीले जाहिलीन का रद्द करेगी, इंतहाले मुब्तिलीन का मुंह तोड़ जवाब देगी, तहरीफे गालीन को शिकस्त देगी, वो मुजद्दिद हैं। अल्लाह ताला has promised that he will send the mujaddideen, the inheritors who will reserve and they will preserve the pristine message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in the first century, Allah tabaraka wa ta'ala sent Khalifatul Muslimin, Amirul Mu'mineen, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz as the mujaddid. In the second century, Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Imam al-Qarashi, Sayyiduna Muhammad bin Idris al-Shafi'i as the mujaddid. In the third century, Allah subhanahu wa ta'ala sent Amir al-Mu'mineen fil Hadith, Sayyiduna al-Amir Imam al-A'immah, Imam Ahl Sunnah, Sayyiduna Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari as the mujaddid. In the fourth century, Allah subhanahu wa ta'ala sent Amir al-Mu'mineen fil Hadith, Sayyiduna al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi as the mujaddid. In the fifth century, Allah subhanahu wa ta'ala sent Hujjatul Islam, Sayyiduna Muhammad bin Muhammad al-Ghazali as the mujaddid. In the 6th century, Allah subhanahu wa ta'ala sent Shaykhul Muhaddiseen, Shaykhul Mufassirin, Al-Imam Al-Shaykh, Al-Imam Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi as the mujaddid. In the 7th century, Allah ta'ala sent Khwaja Khwajgan, Hindul Wali, Atae Rasool, Hazrat Khwaja Gharib Nawaz, Sultanul Hind, Mu'inul Haqqi wal Millah as the mujaddid. In the 7th century, Allah ta'ala sent Khwaja Khwajgan as the mujaddid. In the 8th century, Allah Ta'ala sent Ustazul Muhaddiseen, Imam Zainuddin Iraqi Misri as a mujaddid. In the 9th century, Allah Ta'ala sent Imam al-Muhaddiseen, Khatimatul Hufaz, Imam Jalaluddin al-Suyuti as a mujaddid. Suyuti is that wali of Allah who saw the beloved Prophet 75 times awake with his eyes. In the 10th century, Allah Ta'ala sent Hazrat Imam Mullah Ali Qari Hanafi as a mujaddid. In the 11th century, Allah Ta'ala sent Imam Rabbani, Mujaddid al-Fisani, Hazrat Shaykh Faruqi Sarhandi as a mujaddid. In the 12th century, Allah Tabaraka wa Ta'ala sent Hazrat Sultan Alamgir Badshah as the mujaddid. And Hazrat Mullah Muhibullah Bihari, the author of Musallam al-Thubut as the mujaddid. In the 13th century, Allah Tabaraka wa Ta'ala sent Kawkab al-Diyar al-Hindiya, Hazrat Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehlavi as the mujaddid. And in the 14th century, Allah Ta'ala sent Kushta-e Ishq wa Muhabbat, Malhaz-e Anzar-e Nabuwat, Nahami-e Sunnat, Mahi-e Bidat, Sayyidi Imam Ahl Sunnat, Shah Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi as the mujaddid. Every single mujaddid belongs to the Ahlus Sunnah. कोई वहाबी मुजद्दिद दिखाए, कोई शिया मुजद्दिद दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने मुजद्दिदों के नाम लिए हैं सब सुन्नी हैं। मेरे आका ने सुन्नी इमामों की बशारत दी थी, मेरे आका ने सुन्नी आइम्मा की बशारत दी थी। My Imam gave the glad tidings of Sunni Imams in this hadith of Abu Dawood. इसलिए हम कह सकते हैं कि इमाम अहमद रजा मेरे हुजूर की बशारत है। हदीस तजदीद की रोशनी में इमाम अहमद रजा हुजूर की बशारत है। Today they are self-proclaimed mujaddids, मुजद्दिद रवां सदी। पूरी तंजीमें उनको मुजद्दिद कहती हैं और वो कहलवाते हैं, लेकिन मेरे इमाम वो हैं
मक्के के हनफी काजी उनको मुजद्दिद लिख रहे हैं, मक्के के शाफी मुफ्ती उनको मुजद्दिद लिख रहे हैं, मक्के के हनफी काजी उनको मुजद्दिद लिख रहे हैं. Not his students, the senior ulama of Makkah say you are a mujaddid of this century. आपको पता है उलमा की सफ में जितना हसद है ना किसी के अंदर नहीं है. ये हमारे आइम्मा ने लिखा है. The hasad, the animosity and jealousy that exists among the ulama is like no other. लेकिन मक्के के उलमा अहमद रजा की मोहब्बत में फरेफ्ता. The Maliki Mufti of Makkah, Shaykhul Malikiyah, Mufti Ali Hussain al-Maliki, the grand teacher of Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, he writes, "Oh Ahmad Raza, you are the mujaddid of this century." The Shafi'i Mufti and Qadi of Makkah, Shaykh Muhammad Saeed Babu Sayyid al-Makki al-Shafi'i, he writes, "Ahmad Raza, you are a mujaddid of this century." The Hanafi jurist and Qazi of Makkah, Shaykh Saleh Kamal Hanafi writes, "Ahmad Raza, you are a mujaddid." One of the signs of a mujaddid is that the ulama will benefit from his knowledge. And the ulama will declare him a mujaddid. So we have no doubt. The ulama of the Arab and the Indian world declared our Imam as a mujaddid. Ala Hazrat alayhi Rahma became the marji' of ulama. Imam al-Suyuti in his book At-Tahadduthu bi Ni'matillah, which is his biography, autobiography, Imam al-Suyuti writes this hadith of mujaddid and he gives sharh. And he writes the shara'it and the conditions of a mujaddid. Mullah Ali Qari in Mirqat also, they write the conditions of a mujaddid. One of the conditions is he must be at the end of 100 Islamic years and at the beginning of 100 Islamic years. He must cross the 100 years. The second is that he must become beneficial to not only the public, his benefit should extend to the ulama as well. And he should become a marji', a reference point for the ulama. If we look at Ala Hazrat's Fatawa Razawiyah, over 1,068 questioners who sent their istifta and questions to Bareilly were ulama. How many? 1,068 muftis of the Sharia and ulama. When they got stuck, they would send their questions to Ala Hazrat alayhi Rahma. Ala Hazrat alayhi Rahma, he is the mujaddid of Iman, and also the mujaddid of Ishq and Adab, and also the mujaddid of Ulume Nadira wa Ghariba. But we don't have time to go into all this. Ala Hazrat as the mujaddid of Iman. It is an inseparable necessity for a mujaddid that he must refute heresies. He must eradicate misconceptions. And he must preserve the way of the Ahl Sunnah. Ihqaq haqq aur ibtal batil, mujaddid ka wasf-e lazim ghair munfak hai. Jo mujaddid hoga uske liye lazimi hai कि वो हक को हक साबित करे और बातिल को बातिल साबित करके दिखाए. If somebody is a mujaddid, he must refute heresy. Every single mujaddid faced some heresies. Some mujaddideen faced 1, 2, 3, 4, 5. But oh Ahmad Raza, how many did you face? Ala Hazrat in his time faced hundreds of heresies, and he battled in the field alone. He said himself, "Ik taraf aadaye deen, ik taraf hai hasideen, banda hai tanha shaha, tum pe karodon durud. Kyun kahun bebas hu main, kyun kahun bekas hu main, tum ho main tum par fida, tum pe karodon durud." My Imam Ahmad Raza rahmatullah alayh, let's look at the fitna that he faced. The fitna of ghair muqallids, anti-madhabists, la madhabiyya, pseudo-salafis. Unko salafi na kaha karo.
हकीकी सलफ वाले हम हैं, वो हकीकी सलफी नहीं है, वो गैर मुकल्लिद ला मजहबी है। हकीकी सलफ हमारा है, अहले सुन्नत ही हकीकी सलफ वाले हैं। मा अना अलैहि व अस्हाबी, the Ahlul Sunnah, they represent the Salaf. The fitna of the pseudo-Salafis, anti-madhabists, ghair muqallid, the fitna of the so-called Ahlul Quran, Chakaralwi fitna that denied the hujjiyah and the proof nature of hadith, the fitna of naturies, the followers of Sir Syed Ahmad Khan, इस खबीस को सर सैयद न कहा करो। मेरे इमाम ने मोतक़द के अंदर मोतमद में लिखा, इसको सैयद कहना नाजायज और हराम है। ये सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद नहीं है। सर सैयद अहमद खान, the Naturi fitna, who denied the realities of the daruriyat of deen, of jinn, of malaika, of hellfire, of shaitan. They changed the definitions of these words. The fitna of Najdis and the Wahhabiyya, the fitna of the Rafidi Shias, the fitna of the Mufazzila Tafziliya, who denied the absolute superiority of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu over all of the humans after the prophets and messengers. The fitna of the Mufassiqa, those who said that Hazrat Amir Muawiyah is sinful, ma'azallah. We call them the Shia Mufassiqa. My Imam also tackled their fitna. The Khaksari fitna, the Arya Shudi fitna, the fitna of Imkane Kizb, those who said it is possible for Allah Almighty to lie, ma'azallah. The fitna of Wuku'e Kizb, those who said that it is valid that lying occurs from Allah subhanahu wa ta'ala. The fitna of Inkare Shafaat, the fitna of denying the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the fitna of Inkare Hayatul Anbiya, the fitna of denying the lives of the prophets in their graves, Inkare Tawassul, the fitna of denying taking intermediaries to Allah subhanahu wa ta'ala and wasila, the fitna of Tabarruk, the fitna of Inkare Tabarruk, the fitna of denying seeking blessings from the relics of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, Inkare Istighasa or Istimdad, the fitna of denying the permissibility of saying Ya Ghaus-e Azam, Ya Rasul Allah, Al-Madad Ya Shaykh Abdul Qadir Jilani, the fitna of Inkare Istighasa or Istimdad, the fitna of Inkare Samaya Mauta, denying the faculty of the deceased hearing after they pass away. We believe that those who have passed away, they have the ability to hear and listen. There was a fitna that denied this also. The fitna of Inkare Ikhtiyarat Mustafa, the fitna that questioned and challenged and attacked the authority of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inkare Sultanat Mustafa, Inkare Mojizat Mustafa, Inkare Afzaliyat Mustafa, Inkare Adab o Tazim Mustafa, Inkare Imtinae Nazir Mustafa, Inkare Khatme Nabuwat Mustafa. अरे मैं कितने फितनों का नाम लूं, थक जाऊंगा। मेरे इमाम ने तने तन्हा हुजूर की फैज़े नबूवत से तने तन्हा हर फितने का मुकाबला किया और अपने कलम की तलवार से हर फितने के सर को कलम करके रख दिया। शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ताचीन थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सुआला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सुआला ही गया। कुफर पर एक दिन मशीयत
को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सुआला ही गया। अरे सूरते तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक शहर पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खैरुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमान को मुनव्वर कर दिया, फूल तो हैं फूल खारूं को गुले तर कर दिया। ए इमामे कौम उम्मत के नगहबां जिंदाबाद, ए हमारे मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। मैंने जितना जोर लगाया आपसे ज्यादा जोर लगाएं, फिर झूम के कहें ऐ इमामे कौम उम्मत के नगहबां जिंदाबाद, ऐ हमारे मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। My Imam says, as long as Ahmad Raza is alive and his works remain, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। और हर जगह से आह आह दर्द की आवाजें क्यों आ रही हैं? कभी देवबंद से आह की आवाज आती है, कभी नदवा से आह की आवाज आती है, कभी नज्द से दर्द की आवाज उठती है। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। My Imam was the manifestation of Hazrat Hassan bin Sabit's line, who said, فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدَهُ لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. Indeed, my father, my grandfather, and our honor is all a shield for the honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Karun tere naam pe jaan fida, न बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। Sheikh Khalid Thabit, who is an Egyptian scholar and historian, he writes a book dedicated in tribute to our Imam, Insaful Imam. He says the most beautiful definition I have ever read about Iman. मिस्र के एक आलिम है शेख खालिद साबित, बहुत कमाल की किताब लिखी है उन्होंने, अभी हयात है, इंसाफुल इमाम उसका नाम है। उसमें वो फरमाते हैं ईमान की बहुत सी डेफिनेशंस मैंने जिंदगी में पढ़ी है, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने इमाम अहमद रजा खां के पाई वो किसी किताब में मैंने नहीं देखी। सबसे हसीनो जमील अजमल व अहसन तारीफन लिल ईमान मा कालहुल इमाम अहमद रिदा खान। आला हजरत ने कहा था अगर अहमद रजा के दिल को दो टुकड़े किया जाए तो एक टुकड़े पर लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। We have many closet Shia in us. We have the fitna of those who attack the Sahaba Kiram radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. The afzaliyat of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. They say we celebrate Milad. We do the Urs of Khwaja Sahib. We do Gyaru Sharif. We are Sunni. We attend the Julus. But Amir Muawiyah is a fasiq. Ma'azallah. No, Hazrat Ali is superior than Hazrat Abu Bakr as-Siddiq. Anyone who says any of these two things is against the Ahlul Sunnah and out of the fold of Ahlul Sunnah. Ala Hazrat Azimul Martabat wrote 10 books. How many? 10 books on the Aqidah Afzaliyat of Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, and on the manaqib and virtues of the companions.
and defending the dignity of the Ahle Bayt Athar and the maqam of Hazrat Maula Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ala Hazrat wrote I'tiqad, ab main naam lunga Ala ki kitabon ke. Ala Hazrat wrote the following 10 books on explaining the creed that we need to have regarding the Sahaba Kiram and the Ahle Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ala Hazrat wrote I'tiqad al-Ahbab fil Jamili wal Ali wal Ashab, Muntaha al-Tafsil لمبحث التفضيل، الزلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى، مطلع القمرين في إبانة سبقة العمرين، غاية التحقيق في إمامة العلي والصديق، الكلام البهي في تشبيه الصديق بالنبي، وجد المشوق بجلوة أسماء الصديق والفاروق، تنزيه المكانة الحيدرية عن وصمة عهد الجاهلية، مناقب صديقية and فضائل فاروق. All of these are the books my Imam wrote to defend the ihtiram, ta'zeem and adab of the Sahaba Kiram, all of them and all of the Ahle Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Hazrat Amir Muawiyah in particular, because this is a topic of the age. Anyone who attacks Hazrat Amir Muawiyah and does Tano Tashni, what does my Imam say? Farqe maratib beshumar aur haq badaste Haidar Karrar और मुआविया भी हमारे सरदार और मुआविया भी तान उन पर कारे फुज्जार. To attack Hazrat Maula Ali radiyallahu ta'ala anhu and say he is sinful, or to attack Hazrat Amir Muawiyah and to say he is sinful, this is the way of heretics and deviants. But there is a huge gap between the maqam of Maula Ali radiyallahu ta'ala anhu and Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu anhu. Maula Ali is far superior in his rank, but all of them are Sahaba. All of them have connections with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Maula Ali is from Khas Ahle Kisa, Khas Ahle Bayt Nubuwat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we have adab and ihtiram for all of them. On the adalat, the integrity, the authority, the credibility of Hazrat Amir Muawiyah. Ala Hazrat, this faqir had done tahqiq on this issue. Ala Hazrat wrote 9 books just in the rad of the Shia Mufassiqa to defend the adalat of Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. 9 books. How many? Now listen to the names of these books. البشرى العاجلة من تحف آجلة، الطعن الحيدري في كبد المفتري، الأحاديث الراوية لمدح الأمير معاوية، السمسام الحيدري على حموق العيار المفتري، عرش الإعزاز والإكرام لأول ملوك الإسلام، أعلام الصحابة الموافقين لأمير معاوية وأم المؤمنين، لمعة الشمعة لهدى شيعة الشنعة، رفع العروش الخاوية من أدب الأمير معاوية. My Imam wrote so many books to defend the maqamat of the Ahle Bayt and the Sahaba Kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Our Imam radiyallahu ta'ala anhu was the mujaddid of adab, was the mujaddid of ishq also. Our Imam rahmatullahi ta'ala alayh, he ignited the ishq and mahabbat in the hearts of millions of Muslims around the globe. Which country is there in the world where Mustafa Jani Rahmat does not echo? Where does Mustafa Jani Rahmat not echo in the world? Whether we go to the Far East or the Far West, my Imam's Mustafa Jani Rahmat is echoing throughout the globe. Through his finest poetry, through his prose, Imam Ahmad Raza, in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he does tajdeed of ishq and love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Look at his kalams. Look at how many people here don't even understand his kalam but know all of his kalam. Little children are reading his kalam and don't understand his kalam. Isn't this the acceptance that Allah has placed for him in the hearts of people? Ala Hazrat says, Nazar ek chaman se do char hai. Na chaman chaman bhi nisar hai. अजब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुल जार है. ये समन, ये सौसो नो यासमन, ये बनफ्शा सुम्बुलो नस्तरन, गुलो सरो लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है. ये सबा सनक, वो कली चटक, ये ज़बां चहक, लबे जू छलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है. बादब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलोबाग का, गुले तर मुहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक दयार है.
5 minutes inshallah we'll finish. उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है उन्हीं की बू मायाए समन है उन्हीं का जलवा चमन चमन है उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं उन्हीं की रंगत गुलाब में है वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। अब मेरे पास वक्त नहीं है हर शेर का इंग्लिश में तर्जमा बयान करता, लेकिन टाइम नहीं है, मुझे इशारा मिल गया है। आला हजरत अलैहि रहमा revived the ishq and adab of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in our hearts. Our Imam rahmatullahi ta'ala alayhi through his poetry, and then I said he became the reference point of ilm. आज हमारे अहले सुन्नत का कोई मोतबर फतावा ऐसा नहीं है जिसके अंदर जगह जगह फतावा रज़विया का हवाला ना हो। फतावा सदरुल अफाजिल, फतावा हामिदिया, फतावा मुस्तफविया, फतावा दीदारिया, वकारुल फतावा, फतावा फ़क़ीह मिल्लत, फतावा फैज़ मिल्लत, हज़रत फतावा अमजदिया, बहार शरीयत, हबीबुल फतावा, फतावा मजलिस शरी, जामे अशरफिया के फतावा, दावत इस्लामी के फतावा, हर फतवे को फतावा रज़विया की हाजत है। Our Imam's fatwa are guiding the ummah today. I don't know if you know, I completed my PhD in 2020 in which I researched the fatwa wala Hazrat alayhi rahmah. And my examiners who did not belong to our aqidah, one of them said, we did not know Ahmad Raza was so needed and so important for our time. Can you please translate the fatwas of Ahmad Raza in English? My dear brothers and elders, Ala Hazrat alayhi rahmah's wonders are appearing in front of us today. 3 of his students, 3 of his khulafa, they spread the silsila and the sanad of Bareilly Sharif throughout the world. Because of many people, but particularly 3 people, the sanad of Bareilly spread throughout the whole world. Hazrat Huzur Mufti Azam Hind Shah Mustafa Raza Khan rahmatullah alayh, Hazrat Qutb Madina Sheikh Ziauddin Ahmad Madani rahmatullahi ta'ala alayh, Muballigh Islam, Safir Islam Hazrat Shah Abdul Alim Siddiqui, the father of Hazrat Imam Shah Ahmad Nurani rahmatullahi ta'ala alayh. For example, I want to read, there is a work I am writing, Munyatul Falih, in which I am collating the asanid of the ulama of the Arab world to Ala Hazrat alayhi rahmah. I'm showing you the world importance and the world significance of our Imam. Ala Hazrat alayhi rahmah student Hazrat and Khalifa Hazrat Maulana Abdul Alim Siddiqui. The following great scholars of the Arab world narrate hadith from him and are his students. Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim al-Shadili, the great Imam of the Ahl Sunnah in Egypt. Sayyid Zaki Ibrahim al-Misri rahimahullah ta'ala. Al-Habib Sayyid Ahmad Mashhur Taha al-Haddad al-Ba'alawi, the great Sufi saint of the Ba'alawi silsila. Al-Shaykh al-Allamatul Muhaddis Muhammad Yasin al-Fadani, the Muhaddith of Makkah al-Mukarramah. Al-Shaykh al-Allamatu Ibrahim al-Khutani al-Madani, the Muhaddith of al-Madinatul Munawwara. Al-Sayyid Muhammad al-Zamzami al-Kattani, the great Muhaddith of Morocco. And his brother, Ra'isu Rabitati Ulama'i Dimashq, Al-Allamatu Sayyid Muhammad Makki al-Kattani. Al-Shaykh Muhammad Ali Murad al-Hamawi. All of these ulama and giants of their time have the sanad of Bareilly from Hazrat Shah Abdul Alim Siddiqui rahmatullah alayh. मैं इमाम अहमद रज़ा की आलमगीर शोहरत पर तबसरा कर रहा हूँ और आपकी आलमी इफादियत और आपकी आलमी हुज्जियत और आपके आलमी मकाम और बरेली की सनद की तकवीयत की बात कर रहा हूँ कि पूरा आलम अरब मेरे इमाम से कैसा जुड़ा हुआ है. Then Hazrat Sheikh Ziauddin Madani rahmatullah alayh, I have names of 2 pages of ulama from the Arab world who took the sanad of Bareilly from Huzur Qutb Madina Sheikh Ziauddin Madani. I will only name some of them, some of the famous ones. The Muhaddis of Egypt, Sheikh Muhammad al-Hafiz al-Tijani from Egypt, the Imam of Ahl Sunnah in Egypt.
Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Mulla al-Ahsa'i, the Imam of Ahl Sunnah, the scholar of Ahl Sunnah in Saudi Arabia, al-Hijaz al-Muqaddas, Hijaz Sharif. Sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Ghalayini, from Al al-Ghalayini, one of the greatest families of ilm in Damascus. Sheikh Ibrahim Khalifa al-Ahsa'i, the Muhaddith of Damascus, Sheikh Muhammad Taysir al-Makhzumi, the Muhaddith of Makkah al-Mukarramah, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Many other scholars of the Arab world took the sanad and ijazat of Bareilly from Hazrat Sheikh Ziauddin Madani rahmatullahi ta'ala alayhi. And lastly, Hazrat Huzur Mufti Azam Hind rahmatullah alayhi. I was doing tahqiq on the asanid, the ijazat, the khilafats and the fairs that he distributed throughout the world. The following scholars: Al-Allama al-Shaykh Muhammad ibn al-Arabi al-Tabbani al-Jazairi al-Makki from Algeria. The Qadi of Makkah, al-Shaykh Muhammad Yahya bin Aman al-Makki al-Hanafi. The Egyptian master of hadith, al-Shaykh Muhammad al-Hafiz al-Tijani al-Misri. The Muhaddith of al-Madinah al-Munawwara, al-Shaykh Muhammad Ibrahim bin Sa'adullah al-Khutani al-Madani. All of these great imams, including Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki and his brother Sayyid Hassan bin Alawi, all of them, Sayyid Abbas al-Maliki, all of them have the sanad of Bareilly from Huzur Mufti Azam Hind Shah Mustafa Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi. This is just some of the manifestation of how there is the living global importance of our imam in the field of hadith, in the field of ijazah, in the field of sanad. Ala Hazrat alayhi rahma का वो आखिरी खिताब जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया, उस पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपके वसाया शरीफ में मौजूद है। मेरे इमाम ने अपने चाहने वालों की झुरमट में बैठकर बरेली शरीफ में जो आखिरी खिताब किया था वो क्या था? अहले सुन्नत को जो वसीयतें की थी मेरे इमाम ने उस खिताब के अंदर, आओ हम उस वसीयत को अपने दिल में घर देते हैं और उस वसीयत पर अमल करते हैं। मेरे इमाम ने अपने चाहने वालों के सामने बैठकर ये कहा था कि ए हुजूर की उम्मत, मैं तुमसे अलफिराक होने वाला हूँ। अपने जाने की खबर मेरे इमाम ने दी। फरमाया न जाने कितने दिन कितनी सांसें मेरी बाकी है, लेकिन ये पैगाम मुझसे ले लो और इसे संभाल कर रखो। एक पैगाम में देखे जा रहा हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं। झूम के कहें सुभान अल्लाह। उनसे सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबा ताबईन रोशन हुए, उनसे आइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए, उनसे हम रोशन हुए। और अब हम चाहते हैं कि तुम हमसे रोशन हो जाओ। और अब हम ये चाहते हैं कि तुम हमसे रोशन हो जाओ। और वल्लाह ये रोशनी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत और उनके चाहने वालों से दोस्ती और अल्लाह और उसके रसूलों के दुश्मनों से दुश्मनी। ये वो नूर है जो हुजूर ने सहाबा को दिया, उन्होंने ताबीन को दिया, उन्होंने आइम्मा मुज्तहिदीन को दिया, उन्होंने हमारे हवाले किया। और आज ये अमानत, ये नूर मैं तुम्हें दे रहा हूं। Nabi alayhi salam is the light of Allah. And he illuminated the hearts of the companions, who illuminated the hearts of their followers, the tabi'een. They illuminated the hearts of the mujtahideen, the four imams, and they illuminated our hearts. O ummah of the beloved, I want to enlighten your heart with that light of the Prophet ﷺ. And what is that light? Sincerity, devotion, love for Allah and His Messenger and everything connected with them, and friends of Allah subhanahu wa ta'ala, and to hate the enemies of Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. लोग कहते हैं इमाम अहमद रज़ा बहुत सख्त थे। ये सख्ती अल्लाह को पसंद थी। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर दुश्मनी रखता है, अल्लाह की वजह से रोकता है या देता है, हुजूर फरमाते हैं उसका ईमान कामिल है।
सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह यगारू व इन्नल मुमिन यगारू, अल्लाह भी गैरत रखता है और मोमिन भी दिल में गैरत रखता है। मोमिन बगैरत नहीं हुआ करता, मोमिन के दिल में गैरत ईमानी होती है। The message of today's speech is have a passionate gairat for Islam. Have a passionate devotion of protection of your deen and the aqeedah of Ahl Sunnat wa Jamaat. Be passionate and pass this value on to your children. Have ghairah for deen, for the principles of Islam, for the Sharia and Sunnah of the Prophet ﷺ, and pass this ghairah on to your children. Respect the ulama of Ahlus Sunnah. They are the crowns of our heads. They are the pillars of our deen. They are the inheritors of the prophets. They are the waris of the Prophet ﷺ. Respect the ulama, serve the ulama, sit in the gatherings of the ulama, and recognize the true ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हम इमाम अहमद रज़ा से जाते हुए ये पूछ लेते हैं, आला हजरत आप ये बताएं ये नूर आपको कैसे मिला है? तो इन्हीं अशार पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। ए इमाम अहमद रज़ा, ये जो जिस नूर की आप बात फरमा रहे हैं, ये नूर कहाँ से मिलता है? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। It is the 1500th year। और मैं एक बात कहने वाला हूँ, आला हजरत का विसाल हुआ सफ़र में, और सफ़र के फौरन बाद माह रबीउल अव्वल। क्या मुनासबत है? आला हजरत के चाहने वाले उशाकाने मुस्तफ़ा पहले सफर में इमाम अहमद रजा आशिक़े मुस्तफ़ा की मोहब्बत में झूमते हैं, फिर वो झूमना हुजूर की मोहब्बत के लिए मुकद्दमा बन जाता है। फिर आशिक़ाने मुस्तफ़ा और आशिक़ाने इमाम अहमद रजा फिर हुजूर के मीलाद के लिए तैयारियां करते हैं। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। If what I have said is correct and true, may Allah accept it. If there has been any error, may Allah forgive me. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jazakallahu khairan for your patience. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. This was an amazing and fiery gathering. May Allah keep this love and fire kindled in your hearts, and Allah reward all the ulama for their patience despite their ill health. They remained here listening to us. May Allah reward you all. Jazakallahu khairan. Barakallahu feekum.